जो हमारा डिप्लोमेटिक कोर के कुछ नुमाइंदे हैं उनको एरियल व्यू का जायज़ा लेने के लिए सूबा सिंध का, बलूचिस्तान का और हमने पख्तूनख्वा की भी कोशिश किया कि ऊपर से हम उनको जो नुकसान हुआ है इस सैलाब की वजह से वो हम दिखा सके। और उन्होंने ख़ुद अपने आंखों से जिस ना सिर्फ not only the extent of the damage insofar as कहाँ पानी पहुँचा है, मगर जो पूरे के पूरे गांव डूबे हुए हैं वो ख़ुद हम देख सके, तो मेरे ख्याल में इसका बड़ा असर होगा। हमारा जो फ्लड अपील हमने कल फ्लैश अपील किया था यूनाइटेड नेशंस के लिए, सारे ममालिक के लिए, तो अब जब उनके एम्बेसडर्स ने ख़ुद अपनी आंखों से देखा है, वो अपने ममालिक को एक बेहतरीन वो जो रिपोर्ट है और उसके मुताबिक हमें मदद मिल सकेगी। एक डिस्क्रिपेंसी जो नज़र आ रही है, जो फ्लैश अपील की आपने बात की, कल भी आपसे पूछा गया था, वो 160 मिलियन है और असेसमेंट टोटल जो की गई है अभी तक वो $10 बिलियन की जा रही है। तो हम इन दो चीज़ों को कैसे रिकंसाइल करें? हमने $160 मिलियन का फ्लैश अपील किया है, जो हमारा फ़ौरन ज़रूरत है इस वक्त यूनाइटेड नेशंस के सारे मेंबर स्टेट से। जो 10 बिलियन का ये दूसरे फिगर्स आप सुन रहे हैं वो हवाई से पकड़ के आपके सामने लेकर आए हैं। हाँ, आगे जाके तकरीबन इससे या इससे ज़्यादा नुकसान हो सकता है और वो हमारा रिकन्स्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन फेज़ में हमें असल जायज़ा लेके उसके मुताबिक काम करना पड़ेगा। इस वक्त हम रेस्क्यू और रिलीफ के फेज़ में हैं, फिर हम रिकन्स्ट्रक्शन और रिहेबिलिटेशन के फेज़ में जाएंगे। जहाँ से पानी निकल चुका है वहाँ से तो आप असेसमेंट कर सकते हैं, लेकिन जैसे सूबा सिंध है जहाँ फ्लड अभी तक ऑन गोइंग है, जो मानसून का पानी है वो समंदर की तरफ जा रहा है, तो वो फ्लड ऑन गोइंग है और हम सब अपने आप को ब्रेस कर रहे हैं कि जो ऊपर सरहद की तरफ से पानी नीचे इंडस के थ्रू आ रहा है उसका क्या नुकसान होगा। जब ये हम इस फेज से गुजरते फिर हमें पता चलेगा कि कितना नुकसान हो चुका है। 2010 में ये $10 बिलियन का नुकसान का फिगर दिया गया है। हमें खर्चात है कि इससे ज़्यादा भी नुकसान होगा, और नुकसान ना सिर्फ हमारा लोगों के घरों को, लोगों को एग्रीकल्चर ज़मीन को, उनके माल मवेशी को, हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को, हमारा ब्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर को, और हम इंशाअल्लाह ताला इन सारे सूरत हाल का मुकाबला करेंगे। लेकिन इस वक्त जो हमारा प्रायोरिटी है वो जो लोग फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू करने के लिए, उसके बाद रिलीफ है। और इंटरनेशनल कम्युनिटी का अभी तक रिएक्शन जो है वो कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिएक्शन आया है, लेकिन अर्ली डेज, कल ही हमने अपील लॉन्च किया है और अपील लॉन्च करने के बाद ही हम उनको डायरेक्टली और बायलैटरली रब्ता भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉरेन मिनिस्टर। लेट मी आल्सो टॉक टू द डिग्निटरीज हु हैव जस्ट अराइव्ड अलोंग विद द सर, हाउ डू what was your impression? First of all, it was really very heartening and to see what is happening. We have toured, we have seen what is happening. Us really from UNICEF, we are with the government. Our team is already responding in all the 4 provinces, and this tour is also giving us a view of what is currently happening, and we will step up our support to respond to the floods. Right, and have you actually preliminary conducted any assessment of the damage so far? Oh yes, our team in all the 4 provinces in Balochistan, Sindh, KP and Punjab have done a very good thorough assessment, and we are currently responding with medical support. As I speak, tomorrow or day after tomorrow, we have medical supplies and hygiene kits that are going to come in the country, and I was just speaking to the foreign minister about it. Thank you very much, sir. Excellency, could you find time as well? You have seen the devastation with your own eyes. What is your assessment, and what do you think can be done regarding, alleviating the situation at this moment? Yes, it is actually really a big difference to see this with your own eyes, because of course TV pictures are one thing, but if you see yourself, that is really inundation until
the horizon, and there's water everywhere. It gives us even greater, or makes a greater impact actually. So as it comes to Germany, at least we are contributing. Germany is the biggest contributor to the Central Emergency Relief Fund of the United Nations. So 20% of what's coming out of there is German money. Then we are already active with through project through the Red Cross movement, which will help more than 10,000 families, and other smaller projects for 1,000 families in Balochistan, but that of course will not be the end. We are now trying to mobilize even bigger funds, and as seen that catastrophe happening, it's clear to everybody that this is necessary. Do you think your constituents and people all over the world are aware of this devastation, or we still have to actually communicate further to actually make them aware of this? I think in an early phase it wasn't seen to be so dramatic, but now it actually is. I think if I look back at what you have media coverage in Germany, for example, about this disaster, I think now it is actually clear to everybody that what is happening, and that things have to be done. The scale of the calamity. Thank you very much. Let me hand it over to Umar Khalid Bhatt. I'm here, we represent PTV, and of course we are here to वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। गैर मुल्की सिफारतकार भी उनके हमरा मौजूद थे। अपनी गुफ्तगू में वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि हमने फ्लड अपील भी की है और हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने खुद भी फ़ज़ाई जायजा लिया है। गैर मुल्की सिफारतकारों ने खुद अपनी आंखों से सारी तबाही देखी है। पहला मरहला जिसपे हमारा बिल्कुल मबजूल किए हुए हैं वो रेस्क्यू और रिलीफ का है। दूसरे मरहले में रिकंस्ट्रक्शन और रिहेबिलिटेशन का मरहला है, उस पर बाद में आएंगे, लेकिन सबसे पहले लोगों को रेस्क्यू और रिलीफ फराहम करना है। और आलमी बरादरी के हवाले से उनका कहना था कि उनका रिस्पांस बहुत अच्छा है। सारे ममालिक पाकिस्तान की इस तबाही को अपनी आंखों से देख रहे हैं। उनको इस बात का एहसास है कि पाकिस्तान की मदद को फराहम की जाना चाहिए। organizations and other countries to help Pakistan put the people back in their state of affairs that they were in before all of these calamities happened. First of all, our sincere thanks and appreciation to the Ministry of Foreign Affairs for organizing this aerial view of floods mission to the field. We have witnessed areas completely flooded, no dry land to pump out water even. So therefore, the people are in dire need, because we know that millions, hundreds of thousands are in relief camps and in host communities, and they need our support. From our rapid needs assessment, we see that the flood-affected population people are concerned about the provision of healthcare services. In the first days of the crisis, we immediately prioritized a set of crucial interventions to prevent maternal health, maternal mortality, illness and disability, and to prevent and manage consequences of potential gender-based violence in the flood-affected areas. As the United Nations Population Fund, we have also deployed 23,000 newborn baby kits, clean delivery kits, and dignity kits as well. But still, we need to do a lot more based on our mission today, aerial view of flood-affected areas. We need to do more, we need to scale up. And especially, we need to deliver healthcare services, life-saving maternal healthcare services as well, and then also provide safe spaces for women and girls. This is what we see, especially in those areas in camp settings, including mobile medical camps, tented health facilities to prevent even the outbreak of diseases. So also maybe to address the interruption of the schooling and also health services. What are the priority areas in your point of view as far as the work that needs to be done for the relief and rehabilitation of the people in Pakistan who are affected by the floods is concerned? At this stage, short-term interventions, immediately we need to prioritize health care services to prevent the outbreak of communicable diseases, and also prioritize and create safe spaces for women and girls, for men, boys, for everyone, and also prioritize life-saving services and livelihoods for the population, including
addressing food insecurity in those areas, but also there will be medium-term and longer-term intervention requiring rehabilitation and reconstruction initiatives, especially considering that more than 3,400 roads were damaged by the floods and landslides, including 149 bridges and more than 1 million, close to 1 million houses. All of this requires a kind of integrated approach, so prioritizing all areas, especially water, sanitation and hygiene, healthcare services, food and livelihood for the affected population. And also in this respect, it's also essential to prioritize education so that the schooling is not interrupted for girls and boys. Antonio Guterres calls what is happening in Pakistan as a warning for the entire world, because climate change is a reality that many do not believe in, and what is happening in Pakistan is a sad but true representation of what climate change represents. Do you feel the countries understand what climate change is now that they are seeing what is happening in Pakistan? Yes, what's happening here, it might happen in any country, so given the climate change effects, and also we know that Pakistan is the fifth most affected climate change affected country, so according to global index. Therefore, what's happening here, it might happen anywhere else, in any other countries. All right, so of course we will have the United Nations back as far as all the relief and rehabilitation efforts are concerned. You've already pledged money for Pakistan. There's also the live pledge that happened yesterday, and I'm sure with the arrival of Antonio Guterres to Pakistan, where he will be pledging more to help the people in Pakistan, the United Nations